Let's now move on and shift our focus to another big story of the day. In a grim, chilling reminder of the Pahalgam attack, 2 security guards in Maharashtra were stabbed because they could not read or recite the kalma. The similarities are eerie, just like the innocent tourists in Pahalgam who were targeted for no other reason than their religion. Even in this attack, the security guards were stabbed for no apparent reason except for not knowing the kalma. And viewers, Zubair is a science graduate, lived in the US and taught chemistry. The accused in the Mumbai Mira Road stabbing case is suspected of having some ISIS connections as well. हम 30 साल से रह रहा हूँ इधर से। वो 1-1.5 साल से भी रहता है। 1-1.5 साल से बातचीत नहीं करते? बातचीत कभी किसी से नहीं करते। फैमिली का कोई कभी कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं। कोई लेडी आती थी घर पे जो है? 2 जनता लेडी आदमी और लेडी, 1-2 आदमी आता था। एक आदमी कभी आता था शाम को, अभी कभी एक आदमी जाता था। और लेडी अंदर था क्या नहीं है तो भी बताइए। लेकिन आप लोगों से कोई इंटरेक्शन नहीं रखता था? इंटरेक्शन कुछ नहीं है। अच्छा, आप लोगों को पता कभी चला कि इसको अरेस्ट करके लेकर गए? अरे कल शाम को, कल दोपहर में ये बम हो गया जब बता जरा। अच्छा, पुलिस आई थी आप लोगों से पूछते? वो बताया, वॉचमैन बताया कि ऐसे बक्के अंदर गया। तो 1 घंटे बाद पुलिस आके पकड़ लिया। फोन खोलना नहीं। ओके, तो आप लोगों से भी कभी कोई चीज़ की मदद नहीं मांगी? कोई चीज़ कभी खाने पीने की? कुछ अपने से कुछ नहीं। ओके, कब आता था कब जाता तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन क्योंकि 3-3:30 बजे जाने टाइम देखा बस, इतने बस। अच्छा। And viewers, let's now try and explain to you how we are making a comparison of this incident with what happened in Pahalgam. Why we are really saying that this looks like a Pahalgam rerun in Mumbai. In Pahalgam, the victims were asked to recite kalma. In Mumbai as well, victims were asked to recite kalma. Exactly the same thing. Those who refused were killed in Pahalgam. In Mumbai too, they were attacked for not knowing kalma. And then those who chanted kalma were spared in Pahalgam in April 22, 2025. And then in Mumbai, there was a knife attack on security guards who failed to recite kalma on being asked. And this clearly has become a very gruesome, chilling story, in fact, that we've got for you from Mira Bhayandar at this point in time, how the security guards were stabbed, and prima facie, it looks like a lone wolf attack by radicalized men as per the cops there. One of the victims claimed the accused asked both of them their religion and to recite the kalma, and when they could not, the accused stabbed them with a knife. And now we have some more breaking inputs coming in at this point in time. The accused has been sent to ATS custody till 4th of May. This is the latest update that we are getting for you. The custody is going to continue till 4th of May in the Mira Bhayandar case. We are talking about the accused here. And we'll be going across to my colleague Arunil to get you more details on this important update. Maharashtra ATS has found a note referring to lone wolf attacks, and this man, the accused, was arrested for allegedly attacking 2 security guards after asking their religion. And cops said prima facie, the incident appears to be a lone wolf attack carried out by a radicalized man. Now, the accused has been sent to ATS custody till 4th of May. Now, viewers, the accused, Zubair, initially arrived at the scene, asked for directions to a mosque, and then he left. He returned a short while later. This time, he asked the security guard about his religion and then allegedly asked him to recite the kalma. When the guard refused, the accused suddenly attacked him, stabbed him with a knife. He then entered the security cabin where the other guard was similarly attacked. एक्चुअली वो खुद रेंट पे रह रहा था और हमारा यही ऑफिस है रियल एस्टेट का। तो मैं सिर्फ उसको, मैं अपनी क्लाइंट को उसका फ्लैट दिखाने गया था। तो 2 बार मेरे से बातचीत हुई थी उससे और बहुत अच्छे से बात कर रहा था। वो एक्चुअली लैपटॉप में लगा हुआ रहता था और वो एक्चुअली ट्यूशन वूशन करता था। तो बस उधर उसका लैपटॉप था और वो एक ही जन घर में रह रहा था। बस मैं फिर फ्लैट दिखाया और फिर मैं चले गया, शॉक में चले गया, क्योंकि वो बंदा ऐसा लग रहा था किसी को हाथ से भी नहीं मार सकता, चाकू से क्या मारेगा। And viewers, we have a reaction now coming in from Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis as well, who has reportedly said that this appears to be a case of self-radicalization. Listen in. सेल्फ-रॅडिकलायझेशनचे प्रकरण आहे, त्यामुळे याला केवळ काहीतरी आपल्याला जिहाद करायचा आहे आणि जिहाद करायचा म्हणजे इतर धर्मियांना मारायचं आहे, अशा पद्धतीच्या विचाराने
पेटून त्यांनी हे कार्य केलेलं आहे, त्याला पकडलेलं आहे. आता ATS आणि NIAची मदत घेऊन या रॅडिकलायझेशनच्या पाठीमागे कोण कोण आहे हे देखील या ठिकाणी शोधण्यात येईल. याचं कुटुंब हे परदेशात आहे, ते अमेरिकेमध्ये आहे. हाही अनेक वर्ष परदेशात राहिलेला आहे. त्यानंतर इथे आल्यानंतर पहिल्यांदा कुर्ल्यामध्ये आणि त्याच्यानंतर नवानगरला तो राहायला आला. त्यामुळे आता याच्या पाठीमागे कोण कोण आहेत, याच्या लिंकमध्ये कोण कोण आहेत, अजून कोणी असे रॅडिकलाइज झाले आहेत का, या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या आता तपासामध्ये पुढे येतील. And viewers, with this, we will slip into a very, very short break. We'll be back with lots more. Stay with us.